Hello, Assalamu alaikum to those watch my YouTube video. I want to thank to all those people who watch and like and share my videos. I hope you will watch this video of mine completely and you will understand what I have done in this video and how I have cleaned your face. Thank you for watching this video of mine. Don't skip this video at all. If you do, you will not be able to know how we cleaned his face. In today's video, I will tell you how to remove these blackheads, acne and pimples on your face. I will tell you very easily and comfortable and tell you slowly. If you guys like this video of mine, please like the video and subscribe to the channel because we keep posting such videos for you in which we our shop hair cutting etc and acne tell about the official treatments। जी तो व्यूअर, जैसे कि आप जानते हैं हमने आपको बताया इस वीडियो में आपके ये जो चेहरे पर एक्नी है, पिंपल हैं, ब्लैकहेड्स हैं, ये कैसे रिमूव हो सकते हैं। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता है हमने इसके बारे में आपको एक तेल सजेस्ट किया जो कि तेल का नाम है टी ट्री ऑयल। अगर आप अपने चेहरे पर ये टी ट्री ऑयल लगाते हैं या अपने चेहरे पर ये टी ट्री ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो आपका चेहरा बिल्कुल साफ़ हो जाता है और एक्नी ख़त्म हो जाती है। एक्नी होती क्यों है, इसका रीज़न जान लें। एक्नी होने की वजह ये होती है कि अगर आप अपने चेहरे पर क्लींजिंग नहीं करते हो, स्क्रब वगैरह यूज़ नहीं करते हो तो आपके चेहरे पर एक्नी वगैरह हो जाती है। अगर आप ऑयली चीज़ें खाते हैं जिससे आपका जो कि मैदा है वो ख़राब हो जाता है और आपका जो सीबम है फेस से निकलना शुरू हो जाता है और एक्नी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके जो चेहरे पर ऑयलीपन और फेस जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। उसका रीज़न यही है कि आप अपना ऑयली चीज़ें खाना छोड़ दें और अपने चेहरे की क्लींजिंग किया करें। अगर आप अपने चेहरे की क्लींजिंग करेंगे तो आपका चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और साफ़ हो जाएगा। तो इस भाई का चेहरा जो कि बिल्कुल ख़राब हो चुका था क्लींजिंग की वजह से, देख सकते हैं ब्लैकहेड्स और पिंपल हैं भाई की फेस पर। तो अभी हमने इसको ख़त्म किया, जैसे कि आपने देखा कि किस तरह से हमने इसको रिमूव करना है। आपने वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी, आपने वीडियो देखनी।